Hi everyone, good afternoon. Um, we'll start with the presentation in next couple of minutes while we are waiting for some more people to come in. Um, I can see some people have already joined us. So before we start with the presentation, I'll ask a couple of quick questions. अभी हम लोग अपना बिल्कुल पीक सीजन में चल रहे हैं. Lot of people are on the ground, lot of people are traveling. So आपका कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है, नॉट जस्ट विद ट्रैवल प्लान बट अदरवाइज हाउ इज द बिजनेस, इज इट ग्रोइंग? इस सीजन हमने क्या नए चैलेंजेस फेस करे हैं? आप अगर यूट्यूब पे ज्वाइन कर रहे हैं तो यू कैन शेयर योर कमेंट्स ओवर देयर, सो उस तरह से मेरे को पता चलता रहेगा कि एटलीस्ट सम ऑफ अस आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग. प्लस इट विल बी गुड अगर आप लोग भी कुछ कुछ अपने पॉइंट शेयर करेंगे, देन आई कैन टॉक अबाउट इट ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन. At least for us at Rafclan. Obviously, all of you are working with us since last couple of years. Um, ये वाला साल हमने देखा है कि मतलब it was fairly good in terms of people traveling to common destinations जैसे सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया, थाईलैंड हो गया, बाली हो गया. The common destinations, we have seen lot of people traveling there, and we also learned lot of new things कि किस डेस्टिनेशन में किस तरीके से वी कैन हैंडल मोर बिजनेस, बिकॉज ऑनेस्टली 2024 December, the kind of business that we had on the ground, we had never seen that kind of a business earlier. So we faced certain challenges also, but we tried to fix up as soon as possible. As soon as we felt कि we can control it, we did everything possible as a company to handle it. फिर हमने कुछ कुछ नई चीज़ें भी ट्राई करे थे, जैसे सम ऑफ यू माइट हैव ट्राइड आवर ऑन ट्रिप एप्लीकेशन. So again, we got a lot of good feedback about it. Some people also shared improvement areas about it. So अगर आपके कुछ thoughts हैं, कुछ inputs हैं, feedback है, you can share it on the live chat. You can see that on the right side of your YouTube link. We'll start with the presentation in next couple of minutes. I'll just wait in for some more people to come in. We got late in terms of sharing the link with all of you. So we are just hoping for some more people to come in. And just for reference, before we start the presentation, so today's session, it has two parts. One is we'll talk about the latest industry trends, at least from Traflan's perspective, what we are seeing in terms of how industry is evolving. And given that we have entered a new year, 2025, so how do we best leverage it? 2025 को for all of us, how do we make it the best year possible? Right? Because at least हम लोग वैसे सोचते हैं कि every day has to be better than the previous day, every month has to be better than the previous, and same way every year has to be better than the previous year. So we are trying a lot of things in 2025 as well. कुछ चीज़ें हमने इस पे लिखने का ट्राई करा आज के presentation में. We'll talk about it. But we also had some insights. जो हमें काफ़ी सारे एजेंट्स से बात करके मिलके उनके ट्रिप्स हैंडल करके ट्रिप सेल करके हमें मिलता है, तो वी हैव ट्राइड टू कैप्चर दैट एज वेल ऑन द स्लाइड्स. I see that Jaisanghi sir is from Travel Me Tours. He is sharing few things at more domestic destinations in the list. Okay. I can see that a lot of you have joined. If you have any feedback, some of you have joined in the last couple of minutes. So I was just talking about how 2024 has gone by, and 2025 के अंदर what are we planning? What trends are we seeing at Rafclan in the industry? We speak with a lot of people. I'm sure आप भी बहुत सारे जन से बात करते हैं. So the idea today is exchange thoughts. So you please use the YouTube channel freely. You can put in your live comments, and I'm also reading it side by side. So it will be good two-way engagement. Then after the presentation, I will take few minutes to appreciate our top travel agent partners as well.
for different categories. So I can see that couple of them have already joined us. So that's what we'll discuss today. Just another 2 minutes, 4:10, we'll start with the presentation. It's very nice to see people engaging on YouTube. I can see Shubh Saras Travel as well, IT Nature Club as well. Okay, somebody from Shubh Saras Travel has suggested something about departure. Okay. And in 2025 see, we are looking to hold more webinars. तो अगर आपके कोई suggestions or ideas हो with respect to how do we, what kind of topics you want us to cover, so we can incorporate that as well. So आप हमारे साथ share कर सकते हैं. You can tell your account manager. You can also email us at management@traffic.com अगर आपके पास कोई topics हैं webinar के. So you can tell us and we'll try to do something around it. जैसे I know that हम किसी भी event पे जाते हैं and किसी भी इवेंट में हम लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो लॉट ऑफ ट्रैवल एजेंट्स टेल अस कि दे वांट टू ग्रो द बिजनेस, उसके लिए मार्केटिंग में हेल्प चाहिए. तो अगर उस तरह के आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं वेयर यू वांट अस टू टॉक अबाउट इन द over subsequent weeks, so we can pick it up. Please feel free to share it on management@traffic.com. That's our ID. And so those emails come into three of us as founders, and a lot of senior people are part of that group. So we can pick it up from there. Then so let us start with the presentation. Done. So I see a lot of people have already come in. So, yeah. Yeah. So see, like I said, it's not a very longish session. I'll try to probably cover it in 20, 25 minutes, 30 minutes at max. The idea to uh, have this conversation today is to basically tell you, share with you certain emerging trends which we as Travelan are seeing. And that is after looking at how 2024 has gone by and what kind of changes are we seeing in terms of flight bookings, hotel bookings, holiday bookings. We don't do B2C ourselves. It's a pure B2B platform. So lot of B2C insights come in from travel agents like you. तो जैसे आप लोग हमें बताते हैं कि कस्टमर ये मांग रहा है, यहाँ जाने का है. So that is our way of capturing B2C insights. B2B insights is जब आप हमारे सिस्टम पे कुछ सर्च करते हैं, बुक करते हैं, फिर आप हमें कुछ फीडबैक बताते हैं. So that is how we are able to capture insights more on the B2B side. Then we also talk to our hotel partners, airline partners, attractions to understand how things are operating on the ground. So, so let us start with the positivity, right? All of us realize that 2024 it has probably been the best year from a travel perspective. And all of us see that the industry is growing, but do you have any idea how much is it growing? It will be great if you can share your comments on the live chat. अगले 4-5 साल में कितना इंडस्ट्री ग्रो करने वाला है, इफ यू कैन शेयर दोज फीडबैक्स. अगर आप उससे अपने लाइव चैट में डालेंगे तो इट विल बी ग्रेट, थोड़ा सा एंगेजिंग रहेगा. Right, so while you are putting in the details, let me first talk about outbound travel, right? हम लोग सब Blinkit, Zepto use कर रहे हैं, we are doing that very, very actively. So technically, outbound travel as a segment within travel industry, it is growing at a fast, it is growing at a pace which is faster than like Blinkit, Zepto, जो आपका last mile apps build होते जा रहे हैं, उससे faster outbound travel grow कर रहा है. And if you look at the numbers, currently approximately 3.5, 4 crore Indians are traveling outside. And when you look at how the future looks like, as 2025 already start हो चुका है. 2028 का projection is that this number will grow to 10 crores, which is like 3 times from where we are. Now practically, अगर आप देखेंगे, so this opportunity is for all of us to capture on the B2B side as well as on the B2C side. It is for all of us as travel companies
टू टेक लेवरेज। अगर इतना तेजी से इंडस्ट्री बढ़ रहा है तो हाउ डू वी ऑल्सो टेक अ शेयर ऑफ दैट पाई? 3 times the current number. There is no other industry practically which is growing at this pace. Now, how do we? Some of you are already sharing feedback. That's great. I'll pick it up towards the end. So what can we do as travel companies to be future ready, right? Because हम लोग भी ट्रैवल प्लान में we are trying few things and I'm sure आप लोग भी ट्राई करेंगे कि आपके businesses बढ़े. So we had certain thoughts in process. तो पहला है कि see lot of us are competing with each other. So जब हम at least travel company से बात करते हैं and at least Delhi NCR के अंदर we are able to interact with more travel companies. Then we also do road shows in different cities in India. अभी जैसे we are participating at UTM also, so again we get lot of feedback. One of the most common feedbacks is कि चिराग लोगों को हायर करना, फिर ट्रेन करना, ग्रूम करना, रिटेन करना, दैट इज अ फेयरली बिग प्रॉब्लम। एंड उसके वजह से काफ़ी सारे ट्रैवल कंपनीज दे प्लेटो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। हम में से काफ़ी जन होंगे जिन्होंने कॉल ज्वाइन कर रखे हैं, अदरवाइज जो अपने ट्रैवल कंपनीज रन करते हैं, जहाँ पे इट्स अ वन मैन वन वुमेन आर्मी, आप अकेले अपना बिजनेस चला रहे हैं। कुछ लोग होंगे जहाँ पे ऑलरेडी 2 4 5 लोग हैं, काफी कुछ जन होंगे जहाँ पे 10 से ऊपर लोग होंगे। बट एटलीस्ट जो हमें दिखता है कि बहुत कम ट्रैवल कंपनीज हैं जहाँ पे पीपल आर एबल टू स्केल अप बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। बहुत ही कम, प्रॉबेबली लेस देन 5% कंपनीज होंगे जहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग उस कंपनी में काम करते हैं, राइट। एंड द प्रॉब्लम इज कि अच्छा आपने 1 2 लोगों का हायर किया, वो ट्रेन हुए, ग्रूम किए, फिर उन्होंने अपना ट्रैवल एजेंसी चालू कर लिया, विच इज़ अ फेयरली नॉर्मल। आप लोगों ने भी शायद ट्रैवल कंपनीज वैसे चालू किए होंगे, एंड हमारे यहाँ से भी लोग छोड़ते हैं फिर अपने ट्रैवल कंपनी चालू करते हैं, राइट। सो देर इज नो प्रॉब्लम विद पीपल लिविंग, बट हम उनको कैसे रिटेन रखें, कैसे उनके करियर को उन्हें आगे लेके जाएं, कैसे उन्हें अपने अपने ही कंपनी के अंदर हम ज़्यादा अच्छा फ्यूचर दिखा पाए, राइट। तो हमें लगता है कि एटलीस्ट ट्रैवल इंडस्ट्री में, बिकॉज हमारा काफ़ी अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है, सो ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग पे वी आर नॉट पुटिंग लॉट ऑफ एम्फोसिस। हम स्टार्टिंग में उसे सेल्स करना सिखा देते हैं, ऑपरेशंस करना सिखा देते हैं, मोटा मोटा कौन से डीएमसीज हैं, कहाँ से सप्लाई लेने का है, किस तरह से कस्टमर से बात करने का है, वो सब चीज़ें हम सिखा देते हैं, बट वी डोंट गो बियॉन्ड दैट। जैसे एटलीस्ट फॉर अ कंपनी ऑफ आवर स्केल वी आर करेंटली अराउंड 270 पीपल। हमें दिखता है कि अच्छा डेटा इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो हमने लोगों को एक्सेल पे ट्रेन करना चालू किया, एंड आज नहीं चालू किया, स्टार्टिंग से ही हम भी लोगों को उस पर ट्रेन करते जा रहे थे कि लोग एक्सेल सीखें, डेटा को यूज़ करना सीखें, राइट। सो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अच्छा 2025 का, एंड इट्स एन एक्सरसाइज विच आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू डू फॉर योर बिजनेसेस, कि 2025 के अंदर आपके क्या दिसंबर के गोल्स हैं। हमने अपने गोल्स बना रखे हैं कि दिसंबर 25 में वी एज अ कंपनी नीड टू रीच अ सर्टेन पॉइंट, राइट। सो यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट योर बिजनेस के अच्छा दिसंबर 25 के अंदर, अगले 12 महीने के अंदर, वेयर डू यू वांट टू टेक द कंपनी। उसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा, कितना ओवरऑल बिजनेस होना चाहिए, कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए, कितना प्रॉफिट बनना चाहिए, क्या आप डेस्टिनेशन एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं या फिर आप ऑफिस एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं। एंड व्हेन वी राइट इट डाउन कहीं पे अगर हम लिख लेते हैं तो पहले उससे थोड़ा सा थॉट स्ट्रक्चर हो जाता है, क्लैरिटी मिल जाता है कि अच्छा मैं खुद क्या प्लान कर रहा हूँ। इट इज जस्ट लाइक हैविंग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। तो हमें वो लिख लेना चाहिए कि अच्छा हम अगले 12 महीने में क्या देख रहे हैं अपने कंपनी के लिए, एंड देन वी शुड ब्रेक इट डाउन। एंड जब आप उसे ब्रेक डाउन करना का सोचेंगे तो as long as you are aggressive about your business, then you will realize that you will need more people in the company. If you want more people in the company, so then hiring talent, training talent, grooming them, that becomes a very important aspect. And when we think of scalable, अगर आपके पास आज सॉल्व हो गया तो उसके अगर हमें और आगे ग्रो करवाना है तो हाउ डू वी डू दैट, राइट। सो उधर हमें लगता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड नॉट सस्टेनेबल अगर आप सिर्फ अपने कंपटीशन से हायर करेंगे, बिकॉज अगर इंडस्ट्री 3x बढ़ रहा है तो हमें इंडस्ट्री में और लोग लाने की जरूरत है, सिर्फ एग्जिस्टिंग लोगों को आपस में एक दूसरी जगह शिफ्ट करा के नहीं होगा, राइट। एंड जस्ट एज एन अपडेट, एज ड्राफ्ट प्लान वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग अराउंड talent building also, not just for ourselves but for our travel partner travel agents also. So that is something on the cards. We'll talk more about it in next couple of weeks. 1 month टाइप के अंदर we'll have some update around it. बट आपको भी देखना चाहिए कि आपका 2025 प्लान, उसके अंदर हाउ इम्पोर्टेंट आर पीपल टू अचीविंग दैट प्लान, राइट। एंड वी शुड इन्वेस्ट इन इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, एंड ना कि
मतलब better early than late, I would say. Right. Second aspect, which is again very important, and this saddens me, and also B2B के अंदर भी हो रहा है, B2C के अंदर भी हो रहा है. A lot of us are selling at very low margins. मतलब I know that there are travel agents जो Maldives 500 rupees का मार्कअप रख के सेल कर रहे हैं. Right now practically एक $2,000 का प्रोडक्ट, 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट 500 rupees, I don't think it is justified. राइट एंड उसमें एज अ ट्रैवल इंडस्ट्री, ये मैं आपको ट्रैवल प्लान के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा, बट एज अ ट्रैवल इंडस्ट्री वी नीड टू बी मोर फर्म अबाउट आवर मार्जिन्स, राइट? बिकॉज मैं अपनी टीम को भी बताता हूँ कि वी कैनॉट गो बिलो अ सर्टेन प्राइस इफ यू हैव टू मेंटेन क्वालिटी. आप बोलेंगे कि रेट और कम करना है, प्राइस और कम करना है, दैट्स अ कॉमन फीडबैक, कॉमन कंप्लेन, राइट? बट वो सस्टेनेबल नहीं होता. एंड आई सीन दैट फर्स्ट हैंड फ्रॉम ए पर्सनल ट्रैवल. I traveled to Thailand last year for some conference, and I went with the cheapest transporter, and हम भी उनके services use कर रहे थे transporter के. And I realized कि even though I was traveling alone, उसने एक hatchback कार भेजा हुआ था, right? And बाकी otherwise हम हमेशा SUV या फिर आपको एक sedan ही देने का try करते हैं. As traffic plan sitting here, and also we have a person on the ground in Thailand, we never realized that person is using the cheapest vehicle, cheapest transport option possible, right? हमें लग रहा था कि अच्छा बेस्ट प्राइस है, बट वी डिडंट रियलाइज कि कहीं पे कॉस्ट कटिंग हो रहा है, कटिंग द कॉर्नर्स हो रहा है. सो प्रैक्टिकली एज अ कंपनी देन वी डिसाइडेड टू टेक अ स्टेप कि यार एक सर्टेन प्राइस के नीचे भी कैन गो. And if you come to travelplan.com, if you search on our packages section for an instant quotation, you will also always see a competitive price. We never claim to be the cheapest. At least as the founder of company, I don't try to be the cheapest player in the company, player in the travel industry. Because मेरे को लगता है अगर आपको एक certain service देने का है तो there has to be a fair price to it. There has to be a fair markup to it because we also have to pay salaries to people. हमें भी ऑफिस का रेंट पे करना है. आपके केस में भी सेम रहेगा. एंड B2C के अंदर क्योंकि आजकल हम लोग बहुत सारे एड्स चलाते हैं, व्हाट हैपेंस इज कि द सेम सेट ऑफ कस्टमर्स दे कम टू मल्टीपल ट्रैवल एजेंट्स. वो दो तीन जगह चेक करेगा कि अच्छा कहाँ पे बेस्ट प्राइस मिल रहा है. तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी डोंट गो बिलो अ सर्टेन प्राइस, बिकॉज उससे ना आप जीत रहे हैं ना दूसरा बंदा जीत रहा है. मतलब वो 500 रुपीज के मार्कअप पे स्पेसिफिकली मेरे को लगता है मालदीव्स हो गया, क्रूज हो गया, एटलीस्ट इट सैडल्स मी कि इतना अच्छा प्रीमियम प्रोडक्ट हम कितने से मार्कअप पे सेल कर रहे हैं. सो इट्स वेरी important that collectively as a travel industry we are more firm about it ki okay, let us not go below a certain price. Then another important aspect is and this is specifically applicable again if you are looking at long term and if you are looking at a bigger picture. हम काफी बार बिजनेस उठा लेते हैं थ्रू जुगाड़. काफी बार हम लीड जनरेट कर लेते हैं थ्रू जुगाड़, शॉर्ट टर्म मेथड, शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स, राइट? But it's important कि if we are building a company from a long-term perspective, then we invest our energy. Energy is time, money, people, everything. We invest that at the right places, जिससे आपको longer term advantage भी मिलेगा. जैसे अगर आप सोचते हैं कि कभी आपके पास ज़्यादा फ्री लीड्स आनी चाहिए, ज़्यादा क्वेरीज आनी चाहिए, खुद से लीड्स आनी चाहिए, हमेशा गूगल एड्स पे रिलाई ना करना हो, हमेशा फेसबुक एड्स पे रिलाई ना करना हो, मेटा पे रिलाई ना करना हो. It's important that we start investing in tools like SEO. It's important that we start building organic traffic on various social media channels. So organic traffic has lot of value. So मेरे को लगता है एक marketing and technology, these are the two aspects जहाँ पे you need to take a longer term approach, ना कि अगले 3 महीने का, अगले 1 महीने का, अगले 6 महीने का, but a longer term approach की where do you want to take your business. And जो मैं आपको पहले बता रहा था December 25 का सोचना चाहिए, where do we reach? When I think of marketing and technology and the long term, so it is probably next 3 years के अगले 3 साल में अपने को कहाँ पहुँचने का. Right, so it's important that we set our goals short term, which is like probably just January month, medium term, which is probably December 25, and the long term is maybe December 27. के अगले 3 साल में where do you want to take your company? And अगर industry 3 times बढ़ रहा है, आपको भी अगर 3-4 times अपना business करने का है, so it's important that we start thinking about it and start acting on it from today itself. Acting से पहले obviously thinking is important, and thinking is something which we are trying to sort of
emphasize on today. Yacha, we have certain thoughts. Probably you should think about it, pay attention to it, and probably pick some of it from your business's perspective. This is something which I talked about. उधर मैं margins के perspective से बात कर रहा था. इधर it is about cheap price, right? Now we all would have stayed at different type of hotels: 2-star hotel, unstarred hotel, unbranded hotel, 4-star hotels, 5-star hotels. तो हर एक के अंदर आपका एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन होता है फॉर द स्टार रेटिंग, फॉर द प्राइस दैट यू हैव पेड फॉर द प्रॉपर्टी, राइट? 5 स्टार के अंदर भी आपको बॉम्बे में शायद 10,000 का होटल भी मिलेगा और 50,000 का भी शायद होटल मिलता होगा, बट वो है तो 5 स्टार ही, राइट? तो इट्स इम्पॉर्टेंट that we explain that to the customers and also explain to our internal teams कि the business is not about selling at the cheapest price, it is about investing in the customer service. Because वो agent एटलीस्ट हम वैसे सोचते हैं कि अगर एजेंट के कस्टमर का रिपीट नहीं आएगा तो एजेंसी ग्रो नहीं करेगा, एजेंसी ग्रो नहीं करेगा तो हमारा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा. दैट इज आवर लॉन्गर टर्म थॉट प्रोसेस. That is why in 2024 we tried to introduce something like known as Trafland Trust Guarantee, so that agents feel a lot more confident about working with Trafland. Right, so it's important कि आप अपने point of view से, अपने कंपनी के हिसाब से you also think about कि अच्छा कस्टमर सर्विस 2025 में हम ये 2-3 चीजें करके we will improve upon it. I can share a couple of examples that we are trying to do at Trafland. So when is that on trip we are trying to further improvise. एप्लीकेशन में अब आपको दिखता होगा कि रेस्टोरेंट इन दैट सिटी भी आ जाता है. ये हमने दुबई और सिंगापुर के लिए लाइव कर दिया है. आपको शॉपिंग प्लेसेस भी मिल जाता है, आपको ये भी दिख जाता है कि विच आर द आइटम्स दैट यू शुड पैक व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू द डेस्टिनेशन. तो एज अ ट्रैवलर आपके जो पेन पॉइंट्स हैं वो कम हो गए हैं. फिर वी हैव स्टार्टेड गिविंग आउट सिम कार्ड ऑन कपल ऑफ डेस्टिनेशंस एट कपल ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स. इट्स फॉर फ्री. अगेन द आइडिया इज नॉट टू इट इज नॉट मतलब वी आर नॉट सेलिंग इट उसका कॉस्ट हमने कहीं नहीं लगा रखा बिकॉज उसमें 100% अटैचमेंट रेट नहीं रह पाता. बट द आइडिया इज कि अगर कस्टमर के पास फोन एक्टिव होगा तो वो हमसे बात कर पाएगा. अगर हमसे बात कर पाएगा तो हम उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे इफ समथिंग कम्स ड्यूरिंग द ट्रिप. एंड एक 5-6 दिन के ट्रिप में समथिंग अदर इट कैन डेफिनेटली go up and down, right? So it's important कि the customer has call connectivity. 2025 में भी we are planning certain interventions जिससे आपको आपके कस्टमर को ऑन द ग्राउंड काफ़ी हेल्प मिले, राइट? आपको भी देखना चाहिए कि आप हमें बता भी सकते हैं फ्रॉम अ कस्टमर सर्विस परस्पेक्टिव हाउ टू बी डू अ बेटर जॉब. आप हमें ये भी बता सकते हैं आप क्या सोच रहे हैं कस्टमर सर्विस के बारे में. मे बी वी कैन इनकॉर्पोरेट सम ऑफ दोज थिंग्स ऑन आवर ऐप. Another example which just came to my mind, somebody said कि यार इमरजेंसी नंबर्स भी देखने चाहिए. somebody falls sick, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड इट. आई थिंक वो बीटा टेस्टिंग में होगा अभी. बट यू कैन सी हॉस्पिटल्स नियर बाय, यू कैन सी फार्मेसीज नियर बाय. इफ यू हैव लॉस्ट योर पासपोर्ट, आवर ऐप विल टेल द आवर ऑन ट्रिप कस्टमर ऐप, इट विल टेल द ट्रैवलर कि व्हाट इज द राइट वे टू सॉल्व योर प्रॉब्लम ऑन द ग्राउंड. तो इस तरह से वी आर पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं. एंड वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव इट. वी आर नॉट परफेक्ट टुडे. वी डोंट थिंक वील एवर बी परफेक्ट, बट वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव इट एट अ पेस जहाँ पे हम सबका फायदा हो सके, राइट? सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव दिस लाइन्स एज वेल, राइट? तो वी स्टार्टेड विद हायरिंग पीपल, ट्रेनिंग पीपल, ग्रूमिंग देम, नॉट जस्ट फ्रॉम कॉम्पिटिशन बट फ्रेश रिसोर्स को हायर करके उसे ट्रेन करते हैं. वी स्पोक अबाउट कीपिंग रीजनेबल मार्जिन्स which will allow you to provide good customer service also. अगर margin ठीक होगा तो then we can do lot of things on the ground if something goes wrong. I talked about investing from a longer term perspective. December 27 सोचते हैं जिसमें marketing and tech becomes very important. Provided you want to grow the business, right? अगर business stable रखना है उसमें भी there is no कोई खराबी नहीं उसके अंदर. It's individual choice, right? Now when we think of opportunity and हमने अपने numbers कैसे बना रखे हैं, we are thinking कि अच्छा next मतलब एटलीस्ट हमारा नेक्स्ट 2 years का प्लान है 5x जाने का. बट हम सोचते हैं कि हम ट्रैवल एजेंट्स का भी कैसे बिजनेस तेजी से आगे करें. बिकॉज इफ दे ग्रो देयर बिजनेस दैट इज व्हेन वी कैन आल्सो गेट अ शेयर ऑफ दैट टोटल पाई, राइट? सो अगर आपका बिजनेस 5 times हुआ तो आई एम श्योर उसमें से कुछ पार्ट हमारे पास रहेगा. तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी फोकस ऑन दीज एस्पेक्ट्स. इट्स there's a massive opportunity. And इन सब में सबसे जो overarching सबसे important factor है that is customer experience. अगर आज कस्टमर खुश है
एंड आपके पास वो टीम है उसे मैनेज करने के लिए, टीम डज नॉट हैव टू बी 10 people 20 people, इट कैन जस्ट बी one more person in the team, two more people in the team, three more people in the team. And with OnTrip app, at least we think that we are part of your team, right? So आप अगर खुद का भी बिजनेस चला रहे हो तो OnTrip एप्लीकेशन के थ्रू मैं सारे ट्रैवल एजेंट्स को ये बताता हूँ कि आप सोचो कि ऑपरेशंस आपका हम देख रहे हैं, वी माइट नॉट बी परफेक्ट बट हम आपके 80% काम शायद कम कर देंगे, दैट इज आवर थॉट प्रोसेस, राइट? सो कस्टमर एक्सपीरियंस पे आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन इट। आई सॉ दैट कपल ऑफ कमेंट्स सेड कि हमें छोटा मोटा प्रॉब्लम है, किसी का बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, बट आइडिया इज दैट हाउ टू वी सॉल्व इट टुगेदर एज अ टीम, राइट? वी आर इन इट टुगेदर, आपका बिजनेस बढ़ेगा तो दैट इज हाउ वी ग्रो आवर बिजनेस, राइट? सो CX इज, कस्टमर एक्सपीरियंस इज सुपर क्रिटिकल। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये लोगों को रियलाइज नहीं होता, बट आई थिंक एटलीस्ट ट्रैवल इंडस्ट्री, एंड आई वर्कड इन कपल ऑफ मोर इंडस्ट्रीज बिफोर स्टार्टिंग ट्रैवल and before entering into travel industry, मेरे को लगता है it's the most complex, most difficult industry to be in. It's a service industry. Service industry I think generally भी difficult होता है, but people are traveling all the time 24/7. Specifically जब छुट्टियां होती हैं उस टाइम पे सब लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम लोग छुट्टी नहीं ले सकते। एंड आई हैव अ डियर फ्रेंड क्लोज टू आवर ऑफिस, ही सेड कि यार चिराग अगले 4-5 महीने तो पैसे कमाते हैं, उसके बाद अपना ट्रैवल कर लेंगे। So it's very important that we appreciate ourselves. We give a pat on the back. All of us are doing an amazing job. So at least I know that I will not be able to hear your claps, but I think all of us are doing a fantastic job over there. So that's for each one of us, whether you are an owner in the company, whether you are working for somebody, but we are doing great work together. वी आर क्रिएटिंग मेमोरीज फॉर पीपल। लोग एक बार अगर ऑन ग्राउंड जाते हैं, किसी ट्रिप पे जाते हैं तो काफी पैसे बचा के जाते हैं, एंड दे वांट द बेस्ट एक्सपीरियंस टू बी देयर ऑन द ग्राउंड, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस नीड टू बी लाइक प्राउड ऑफ। I genuinely believe that it is for my team as well, for our travel agent, partner travel agents as well, for their team members also. That I think all of us are champions, right? It's a difficult industry. अगर हम अपने आप को motivated रखेंगे तो that is how we can do a fantastic job together. So it's important that we are motivated ourselves and we motivate our team members also by appreciating them. Small gestures help a lot. Within our team also, I think that works quite a bit, right? And the way we look at it is कि we are in the golden era of travel. Industry is growing at a very, very fast pace. हम उसमें से कितना खुद के लिए कैप्चर कर सकते हैं, इट इज आवर कैपेबिलिटी, आवर इंटेंट। तो आई वुड सजेस्ट कि हम उस इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रहा है उसके साथ वी शुड आल्सो लाइक बी ऑन द पेस, वी शुड catch up with it, right? Now something, so I see that we have a couple of people already with us. So 2024 में, from our company's perspective, we grew significantly, and it is not possible without all of your contribution. आप लोग अगर contribute नहीं करेंगे तो nothing is possible. So we always had awards at a monthly level. अलग अलग मंथ के अंदर कौन जीत रहा है, इस बार we have awards at the annual level as well. So हमारे पास 3 categories हैं: flights, hotels, and holidays. And we have one winner each in each category. That does not mean कि we don't appreciate others. Obviously, आप सबका चाहे सिंगल बुकिंग भी हो, वीजा बुकिंग भी हो, होटल का भी बुकिंग हो, ऑल ऑफ दैट मैटर्स क्वाइट अ लॉट टू अस। किसी सिंगल ट्रिप पे भी इशू होता है, वी डोंट लुक एट कि उस एजेंट से कितना काम आ रहा है, वी लुक एट कि customer is getting panicky, anxious on the ground. So we are there to solve it, right? So as we start with the awards, so firstly, so the category is Zero of Excellence, right? The first award goes to, it is for Sky Captain. It is for travel agents who have done maximum business with us. So the Sky Captain award goes to Gopal Joshi ji. I'll just let him in. Okay. Gopal sir, are you able to hear me? Your mic is on mute. Yes, I can hear you.
Hi, thank you so much, sir, for your contribution this year. आप कॉल पे लास्ट 30 मिनट से थे, I could see it. Yes. Thank you so much for your contribution. I hope 2025 also we are able to do great business together. Thank you, sir. Yes, if you want to say something, the stage is all yours. The virtual stage is all yours. एक्चुअली सर मैं काम तो लास्ट ईयर से अच्छा ही कर रहा हूँ, और इस जी चाहूंगा कि इस साल भी मैं अच्छा ही करूँ आपका काम। पर थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट चाहिए अराउंड आपका, जैसे कि आपका ये जो ट्रिप्स होता है ना, जी तो फॉरेन ट्रिप्स होती है, उसमें जी आप लोग को सपोर्ट टीम का एक एक है ना नंबर होना चाहिए, जिससे मैं डेडिकेटेड नंबर होना चाहिए, जिसको बोलते हैं ना डेडिकेट नंबर, हाँ जिससे जी, मैं बात करके कुछ मुझे क्वारी है तो मैं उसको सॉल्व कर सकूँ उसके साथ बैठ के। श्योर एक्चुअली सर। काफी टाइम मुझे है ना मेल में बात करनी पड़ती है, बार बार मेल करना पड़ता है, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है हमारे लिए सर। ठीक है। सो गोपाल जी, एक्चुअली को मैं आपके ना अकाउंट मैनेजर से भी कहता हूँ जब आप फ्री होंगे, दे विल एक्सप्लेन यू वेरियस थिंग्स ऑन द सिस्टम, बट जैसे हमारा प्री ट्रिप एंड पोस्ट ट्रिप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव सर्टेन नंबर्स। तो जैसे प्री ट्रिप अगर आपको ओके। बुकिंग में कहीं पे हेल्प चाहिए तो डेस्टिनेशन लेवल हमारे डेस्टिनेशन एक्सपर्ट्स होते हैं। आप जब हम्म। traveler.com पे जाते हैं, आप किसी भी डेस्टिनेशन पे क्लिक करेंगे अगर, तो आपको उस बाकी तो डेस्टिनेशन का एक्सपर्ट मिलेगा, जिसको अच्छा। डेस्टिनेशन अच्छे से समझ आता है। नहीं तो नहीं अगर आप ये हाँ ये भी नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, पर हम्म, डेस्टिनेशन एक्सपर्ट को भी अगर मैं कॉल करता हूँ ना, कई बार होता है कि कॉल अटेंड नहीं हो पाता सर। अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो उधर हम वैसे कोशिश करते हैं, हमारे पास भी ना एक टिकटिंग सिस्टम बना हुआ है, तो नहीं, जस्ट इन केस अगर कुछ मिस रहा है। बाकी आपका जो ऐप है और परफॉर्मेंस है बेस्ट है सर। हम लोग मोबाइल ऐप नहीं, भी यूज कर रहे हैं, हमें आपका बहुत अच्छा लगता हाँ है जी यूज करके जी सर। जी जी जी। नहीं, थैंक यू सो मच गोपाल जी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट थ्रू आउट द ईयर, रियली थैंक यू सर। अप्रिशिएटेड। है ना, एंड आई लास्ट योर थैंक यू अकाउंट सर। मैनेजर टू कॉल यू अप आफ्टर द मीटिंग, है ना, आप जब भी फ्री होंगे। जरूर सर। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच गोपाल जी। थैंक यू फॉर द अवार्ड। No, it's a pleasure, Gopalji, and you will receive a surprise very soon at your office. ओके सर। Right, sir. The next award we have for the travel partner who has done maximum hotel bookings with us. So the category name is Hotel Titan Award, and we have Mr. Ankush from Kushark Holidays Private Limited. Ankush ji, am I audible? गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, अंकुश जी, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर। थैंक अंकुश यू जी, फॉर थैंक यू दिस सो मच अवार्ड फॉर योर सर। सपोर्ट. It's our pleasure to have you with us बस as a partner. अच्छा लगता है, छोटे छोटे सरप्राइजेज और अवार्ड्स मतलब और मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। तो हाँ अच्छा कॉन्सेप्ट है ट्रैक प्लान का कि ये अवार्ड्स और सरप्राइजेज देते रहते हैं। हाँ, नहीं, थैंक यू सो मच अंकुश जी. इट्स अ प्लेजर दैट यू वर्क विद अस, एंड आपके कोई भी कंप्लेन्स, फीडबैक, सजेशंस 2025 में हाउ टू सर ग्रो द बस बिजनेस. एक सजेशन है मेरा, जो हर जी बार मैं हर किसी को ट्रैक प्लान में बोलता हूँ। जी सर जी जी आपकी जो टीम है ना, एस्केलेशन टीम, जी, वो आई थिंक सेम ऑफिस में है। बिल्कुल. हमारी दोनों तरफ है, ऑन ग्राउंड भी है हाँ, और ऑफिस में भी है. तो जो तो सेम ट्वेंटी ऑफिस फोर वाली है सेवन ना, जी. सर उसे आपको अलग करना होगा ऑफिस से। अगर मैं अपनी मेरठ की लैंग्वेज में कहूँ ना, तो भाईचारा हाँ, चल रहा है। ओके ओके, तो वो थैंक यू सो मच. एस्केलेशन एस्केलेशन वहीं तक रह जाता है। हाँ भाई, ओके. तेरी एस्केलेशन आई है, कैसे करना है। हाँ, तो या तो एक्चुअली टीम अंकुश अलग जी बिठाओ, हमारा, जी या जी जी, बंदे ऐसे बिठाओ जो आपस भाईचारा ना चले। अंडरस्टूड. इनफैक्ट अंकुश जी, मतलब मेरा ना थोड़ा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है. मेरे को लगता है कि अगर हम आसपास होते हैं तो वी आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. सर नहीं हो पा जैस रही, नहीं हो पा नहीं हो पा रही। रहा. ओके, चलो मैं एक बार देख पाता हूँ अंकुश जी, है ना. बस एंड आई वुड बाकी लाइक सब टू, अच्छा है। होटल बाकी सब टीम के बढ़िया. लिए मैं मतलब होटल टीम ऐसे कहूंगा, अभी तक नाम नहीं लूंगा, जितने भी और अलग वेंडर या पोर्टल्स है, जी, होटल टीम ट्रैक प्लान से अच्छी किसी की नहीं है। जो मुझे थैंक यू सपोर्ट सो मिलता मच. है होटल, इसलिए मैं होटल सबसे ज्यादा होटल्स ही करता हूँ। पैकेजेस में नहीं हो पाते, वो केवल सपोर्ट की जी, वजह से। लेकिन ओके होटल टीम ओके आपकी बहुत ही अच्छी है। ओके, ठीक है. थैंक यू सो मच अंकुश जी थैंक यू फॉर सर, योर टाइम. थैंक यू सो मच थैंक्स सर। फॉर बीइंग ऑन द कॉल फॉर लास्ट 40 minutes ऑलमोस्ट. थैंक यू सो ओके मच. सर, ओके, बाय बाय सर। बाय बाय. Next, we have a category. It is for travel agent who has done maximum international holiday packages with us. And for that, we have Soumya from Thrilophilia. Soumya, are you there on the call? Yeah, hi Chirag. Hi, Soumya. Soumya, thank you so much. I know that we started some time back.
And sorry for informing you so late about this webinar today. That's okay, Chirag. No, but thank you so much for your support over the last year. And we look forward to a strong 2025 together. Yeah, so I think it's a new concept from some of our B2B partners. So having the webinar like this and having some, award functions. I just heard it just some half an hour before. So I just Okay. wanted to know, okay, how is it going on? So that's why I just joined the thing. And thank you so much Understood. for all the information Okay. and for Thank you your so much, time as Soumya. well. No, it's a pleasure, Soumya. Thank you so much for your support throughout the year. Okay. Thank you. Bye-bye. Thank you. And I think with that, we are at the end of the presentation. So like I explained at the very start, see, 2024 is past us, right? It's important that we make the best use of 2025. Usme it's important that we stay on track. We first set our goals. That was my starting point. कि हम सबको पता होना चाहिए what are we aiming for in this calendar year. And I would like to wish everyone a very happy new year. आप सबने साल के बिल्कुल starting में this is our first webinar for the year. You took out so much of time to listen to it. Some of you have shared your feedback, inputs as well about starting new destinations. There are a bunch of other things also. So we'll pick it up as a company. It's important that see wherever you feel we can help you grow your business. You tell us. आप हमें बता सकते हैं किस तरीके से we can help you grow in 2025. We have set up very ambitious targets for our team, and we cannot achieve it without your support, right? So अगर आपके कोई complaints, feedbacks वगैरह भी हैं, we are very happy to listen to it, solve it, so that in this year we don't start the year with a negative thought in our mind, right? So it's important that all of us come together. किसी भी तरीके से हम आपको support कर सकते हैं as Traflan, otherwise we are very happy to do that. But it's important that we work together and we see that what is happening in the industry. जैसे मेरे को लगता है technology is again something which is changing at a very, very fast pace, right? So as a travel tech company, I would say we are trying to do our level best. And you will see over the next couple of months certain killer features which nobody had thought of in 2024 or say 5 years back, right? So we are also trying to ensure कि आपका खुद का बिजनेस कैसे आसान हो जाए, पर बुकिंग आपको कम टाइम लगाना पड़े. जैसे मोबाइल ऐप इज वन एग्जांपल, ऑन ट्रिप ऐप इज अनदर एग्जांपल. मोबाइल ऐप इज ए ट्रैवलन का मोबाइल ऐप फॉर ट्रैवल एजेंट्स. ऑन ट्रिप इज एन एग्जांपल जिससे आपका ऑपरेशंस का काम कम हो जाता है. तो उस तरीके हम काफ़ी सारी चीज़ें बिल्ड करना चाहते हैं, कर रहे हैं. So please share your feedback. I would like to thank everyone once again for joining the session today. With that, I'm at the close of the presentation today. Thank you so much for your time. Have a good day and have a strong 2025 ahead.